Data structures and algorithms. Okay, so we'll divide it. Data structures are ways to store and organize data in a computer so that it can be accessed and modified efficiently. ये तो पूरा डेफिनेशन हो गई डेटा स्ट्रक्चर की. मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स कहाँ पे यूज़ होता है? टू स्टोर एनी डेटा इन अ कंप्यूटर एंड टू एक्सेस इट according to users need from the computer, and it also enable to efficient computation of complex problems. Data structures are divided into two types: linear and non-linear. Array, linked list, stack, and queue are linear, और ट्री ग्राफ हैश टेबल आर नॉन लिनियर. ये सारे हम इसी स्लाइड में देखेंगे, सारों का इंट्रोडक्शन. ओके, and what are algorithms? Algorithms are basically pseudocode for solving a problem. Why does data structures and algorithms matter? Okay, I'll explain the main point, and if you want to read the theory, you can. Otherwise, you can skip too. That doesn't really matter. Concept matters. So, optimize performance. The word, what does the word optimize means? Optimize का मतलब क्या होता है? To reduce something. So in our field, optimize means to reduce the line of code. If the line of code will be less, then it will consume less memory and the code will run faster. It will be easier for the compiler to run the code. So memory management is very important aspect in our computer. Second point. Next point is solve complex problems. Of course, we'll use DSA for solving some more complex problems to understand it very easily. Real world application. Algorithms like binary search and graph traversal are used to find and rank web pages quickly. You have heard about SEO, means search engine optimization. So, binary search and graph traversals are some algorithms which are used in that applications. Taking good jobs, of course, we all are studying this all stuff for at last for taking a good financial job. So many product based companies like Amazon, Google are having interview sessions for especially for DSA, which is very tough. So for that we need to understand the DSA to solve any complex problem. So at the end of the session of the DSA program, we will also see some complex problems which are which are asked in companies like Google, Amazon. Okay. Okay, arrays. Arrays are most basic and fundamental data structure. So, arrays are linear data structure where elements are stored in a contiguous memory location, allowing for direct access to any element using an index. Okay, ये तो थियोरी थी और बाउंसर चली गई. So, ये भी समझ में नहीं आएगी आपको. This you will get to know after understanding the concept. So, imagine a scenario with me. I hope you all are aware about C programming, basic C programming. So imagine you have a variable A of integer type, and I have stored value 5 into it. What if I want to store 5 and 6 together into a variable A? Is this possible? Comment down. Together, not after manually changing it. Together. Comment down. Okay, so it is not possible. It's possible until and unless you use an array. So array means if I want to store more than one value into a variable together. So for that we have to make an array of the variable. And the thing is we can make array of variable and the value inside that variable should be of same data type. Okay, I'll say in Hindi. जो वैल्यू हम एरे में स्टोर करवा सकते हैं कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए. मीन्स हम एक एरे में सारे इंटीजर्स के वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, दूसरे एरे में सारी स्ट्रिंग वैल्यूज. यू कैन नॉट डू लाइक इन एन एरे यू हैव इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू. दैट्स नॉट पॉसिबल. दैट्स पॉसिबल इन स्ट्रक्चर. ओके. Okay, so next are stacks data structure. A stack is a fundamental data structure in computer science that follows last in first out LIFO principle. This means that the last element added to the stack is the first one to be removed.
uh, the point is to say that the स्टैक में क्या होता है, जो एलिमेंट करंटली ऐड हुआ है इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव, मतलब वही एलिमेंट हम पहले रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद जो सारे नीचे के एलिमेंट्स है वो हम रिमूव कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं. सो द मोस्ट बेसिक नॉन टेक्निकल एग्जांपल इज स्टेक ऑफ प्लेट्स. अगर कोई वेटर आपको प्लेट्स देने आ रहा है तो सबसे पहले वो आपको पहली प्लेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा. विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम मिडल और फ्रॉम लास्ट ऑफ कोर्स. The next is undo redo option in Word. This is used. Then search history of any browser, and you can see a stack of books. So these were the basic fundamental of stack data structure. So the most basic non-technical example is stack of plates. अगर कोई वेटर आपको प्लेट्स देने आ रहा है तो सबसे पहले वो आपको पहली प्लेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा. विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम मिडल और फ्रॉम लास्ट ऑफ कोर्स. The next is undo redo option in Word. In Word, this is used. Then search history of any browser, and you can see a stack of books. So these were the basic fundamental of stack data structure. Okay, so queue data structure. A queue is a fundamental data structure in computer science that follows first in first out principle. ये stack का totally opposite है. This means that the first element added to the queue is the first one to be removed. For example, the line at ticket counter, the first person to arrive is first one to be served. Like it's like first come first served. For example, in a network, all the computers, if all the computers want to share a packet, then the first one to share the packet is the first one removed from the server. This is the basic example. The second example is if there is a one printer and it has more than one task, then the first task is prioritized first, okay, and it is removed after the completion of the task. And the last example is an elevator or a lift. Okay, so linked list. A linked list is a linear data structure where elements, also called nodes, are stored in a sequence, unlike arrays. तो arrays में हमने क्या देखा कि सारे elements थे वो फिक्स स्टोरेज फिक्स मेमोरी में स्टोर थे एंड उसे हम कोई स्पेसिफिक इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते थे. तो लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है. लिंक लिस्ट इज बेसिकली अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर अ नोड कंटेन्स टू थिंग्स, डेटा एंड नेक्स्ट पॉइंटर. डेटा मतलब खुद की मतलब नोड की वैल्यू, एंड दूसरे जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस पहले वाले नोड में स्टोर होता है. दैट्स कॉल्ड नेक्स्ट पॉइंटर. ओके, सो लास्ट स्लाइड इज फॉर ग्राफ्स एंड ट्रीज. सो ग्राफ और ट्री के बारे में हम कुछ ज़्यादा इस स्लाइड में नहीं देखेंगे. सो ग्राफ्स आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज. मतलब उस इसमें भी नोड्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे edges के थ्रू. So this will show the relationship between the nodes. So trees are hierarchical data structures that resemble upside down tree. The tree consists of nodes organized in a parental relationship with a root node and the top. ट्री में क्या होता है कि एक रूट नोड होता है और उससे उसके नीचे होते हैं उसके सब चाइल्ड नोड्स, देन देयर चाइल्ड नोड्स, लाइक ऐसा. और लास्ट में होते हैं लीफ नोड्स. सो लास्ट में सारे नोड्स होते हैं उसको लीफ नोड बोलते हैं. सो दिस इज बेसिकली अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. और ग्राफ और ट्री के बारे में हम लास्ट में मतलब डिटेल में बाद में देखेंगे. Okay, guys, so we are done with our introduction part. So thanks for watching. And yes, इस वीडियो में अगर आपको इतना भी कुछ समझ में नहीं आया तो डोंट वरी एट ऑल. हम सारे डेटा स्ट्रक्चर के वीडियोस अपलोड करेंगे इस प्लेलिस्ट में और उसे समझेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. गूगल और सारे टेक कंपनीज में जो जो इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए गए थे वो भी हम सॉल्व करेंगे. एंड कमेंट डाउन इस ये सारे कोड हम कौन सी लैंग्वेज में करें, जावा, C++, पाइथन, आप जो भी कहो उसमें हम करेंगे. सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल.